पिछले दिनों ज़कात फाउंडेशन ने बांग्लादेश में आए हालिया सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान से जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर और बांग्लादेश से जर्नलिस्ट इमरान अंसारी ने शिरकत की। इस मौके पर प्लानिंग और डेवलपमेंट डायरेक्टर डॉक्टर फ़ारूक रज़ा ने बताया, ज़कात फाउंडेशन 2001 से एक NGO के तौर पे काम कर रही है। हम अमेरिका के अंदर भी काम करते हैं, जहाँ पे कोई डिज़ास्टर आता है या कोई इस किस्म के जैसे कोविड के हालात बनते हैं तो उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की सूरत हाल को देखते हुए चाह रहे थे कि एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे किया जाए जिसमें करंट अफेयर्स पे भी बात हो और साथ साथ बांग्लादेश में जो तूफ़ान आया हुआ है तो उसमें उन लोगों की मदद के लिए फ़ंड रेजिंग का एहतमाम हो। तो इसलिए कल हम डैलस गए थे, वहाँ की कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया। आज हम यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं ह्यूस्टन में, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें हमारी मदद करें। इस मौके पर ज़कात फाउंडेशन के ह्यूस्टन में मौजूद नुमाइंदे सैयद यूसुफ ने ज़कात फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद से भी आगाह किया। Zakat Foundation has 3 programs with 0 reductions. One of them is orphans, one of them is Zakat Foundation, Zakat, and third one is emergency. Obviously, from day one, that catastrophe that happened in Bangladesh, Zakat Foundation immediately dispatched $100,000 for the aid of the Bangladeshi brothers and sisters. And inshallah, we're trying our best to do more, and our goal is beyond this flood emergency response. We will inshallah put together a development plan for different communities who are affected by these floods. If you really want to help Bangladesh this time, please help and support Bangladesh, contribute financially, and make awareness in the social media about the situation, both Indian situation, what India is doing to Bangladesh, plus the current flood. Also, we have to make a permanent solution for this dam. We have to make a counter dam, so that's the only way it will be resolved. As you know that China gave us a proposal to make a counter dam, and in that case Bangladesh will be safe. You know what's happening in Bangladesh. There are floods in Bangladesh. 19 districts of Bangladesh heavily affected by flood, and more than 5.5 million people directly affected for this flood. We are observing flood in those areas. We never been seen these types of flood happen last 50 years, like Feni and Kumilla. Problem is that this year, when heavy rainfall in India upstream, they never alarming Bangladesh, and they never inform Bangladesh that there are heavy rainfall going on, and they are going to open all of the sluice gate. So that's why they suddenly open the gate and heavy flood Bangladesh observed. And that's why Bangladesh people said that Bangladesh people believe that it is a dam boom from India. हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे अपने मुल्क के लोगों की इंशाल्लाह, और इनके एट्रॉसिटीज़ के बारे में लोकल कम्युनिटी को ज़रूर बताएंगे। This flood, yes, it affected us, but we're very strong people, we're hardworking people. All over the world, all Bangladeshi people, please come forward and send money to Bangladesh flood victims through Zakat Foundations. We just did money. The Zakat Foundation of America. Visit their website and please donate. You can sign up monthly to help one family, to 25 families, to 50 families. We all need to come together, help Bangladesh overcome this difficulty.